नमस्कार दोस्तों, मैं नीलिमा गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल अनिविज्ञ पे। आज हम करेंगे मार्च के सेकेंड वीक का वीकली न्यूज, जहाँ पे हम देखेंगे क्रिकेट के बारे में, गौतम बुद्धा के बारे में, सोलार एनर्जी, ड्रोन्स के बारे में, अंटार्कटिका के बारे में और कुछ नए अपॉइंटमेंट्स के बारे में। सो लेट अस स्टार्ट विद द न्यूज दैट मैटर्स द मोस्ट। वी डेम्स डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022, इंडिया रैंक 93। अब ये कुछ ऐसे टाइप्स की रिपोर्ट होती है जो ग्लोबली पब्लिश होती हैं और ये रिपोर्ट की रैंकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ऐसी काफ़ी रिपोर्ट्स आती रहेंगी, मैं आपको इंक्लूड करके बताती रहूंगी। इस वक्त ये डेमोक्रेसी रिपोर्ट है, इसके पब्लिशिंग हाउस है वी डेम इंस्टीट्यूट एट स्वीडन यूनिवर्सिटी ऑफ गॉथेनबर्ग। वहां से ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है, डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022, ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर। तो ये रिपोर्ट क्लासीफाई करती है बेसिकली सोसाइटीज को और कंट्रीज को ऑन द बेसिस ऑफ ये कितने ज्यादा फ्री और लिबरल है। या तो ये कम्प्लीटली लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स है, या इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी है, या इलेक्ट तो हो रहे बट ऑटोक्रेसी है, या पूरी तरह से कंप्लीट ऑटोक्रेसी है जहाँ पे कोई फ्रीडम नहीं है। इस रैंकिंग में इंडिया का रैंक आया है 93 ऑन दी एलडीआई, दैट इज लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स, आउट ऑफ 179 कंट्रीज। इंडिया टॉप 10 कंट्रीज में आता है जो ऑटोक्रेटर्स इस वक्त है पूरे वर्ल्ड में, एज पर दिस रिपोर्ट। द अदर कंट्रीज इन द साउथ एशिया हैज रैंक 88 for Sri Lanka, 71 for Nepal, Bhutan 65 and Pakistan 117. Next news. Jyoti Aditya Scindia inaugurates first drone school at Gwalior in Madhya Pradesh. कुछ वियर्ड लग रहा है ना? हाँ, ये एक्चुअली नया टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है। हमने कई टाइप के स्कूल सुने, सैनिक स्कूल सुने हैं, रेगुलर स्कूल सुने हैं, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड्स, बट ड्रोन स्कूल्स, as you know, the future trend in education is all about technology, all about AI, मशीन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स, और उसी के डायरेक्शन में ग्रो होते हुए ज्योति आदित्य सिंधिया, जो कि यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, एंड मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर दैट इज शिवराज सिंह चौहान, jointly inaugurated the first drone school in Gwalior, Madhya Pradesh. And no, this is not the only school. There are more 4 schools to be opened in the cities of Bhopal, Indore, Jabalpur and Satna. ये जो ड्रोन स्कूल है ग्वालियर में will not only pave the way for the youth of Madhya Pradesh to move forward by connecting with technology, but also increase the employment opportunities. आने वाला जमाना, जैसे मैंने आपको कहा, पूरी तरह से टेक्नोलॉजी का है, और हमारा टेक्नोलॉजी के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक टर्म आता है स्टेम, दैट इज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, और एजुकेशन को इस डायरेक्शन में बढ़ने की बहुत जरूरत है विद रिस्पेक्ट टू दी टेक्नोलॉजी एंड दी अपकमिंग ट्रेंड्स इन दी एजुकेशन। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु गवर्नमेंट इनॉग्रेटेड इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट। दिस इज नॉट द फर्स्ट प्रोजेक्ट, सोलर प्रोजेक्ट, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये लॉन्च हुआ है। ऐसे और कई प्रोजेक्ट्स हमने लॉन्च किए हैं इंडिया में सोलर प्रोजेक्ट, बट ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है जो कि वाटर पे इनॉग्रेट किया गया है, विच इज अ फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट। So Tamil Nadu Chief Minister, that is M.K. Stalin, has inaugurated largest solar power plant project at a cost of 150 crores, और ये प्रोजेक्ट का काम है to provide clean energy, aims to provide environmental sustainable power generation and to reduce the carbon footprint. ये जो पूरा सोलार पावर प्लांट है, this has been owned by Greenum Energy, a whole subsidiary of AM International. Next. Arushi Verma named to represent India at Climate Force Antarctica Expedition. National level shooter and environmentalist Arushi Verma को सिलेक्ट किया गया है इंडिया से at the 2041 Climate Force Antarctica Expedition, which is supposed to take place in March 2022. Arushi Verma is a national level shooter in pistol and trap shooting at state and northern Indian champion and national level medalist, and along with that she is an active environmentalist also, and she is been fully supported for this project by Hans Foundation. Next, C-DAC installed PARAM Ganga supercomputer at IIT Roorkee. Center for Development and Advanced Computing, इसे हम C-DAC कहते हैं, which has designed and installed a supercomputer called as Param Ganga at IIT Roorkee under the phase 2 of supercomputing mission NSM. Param Ganga has a supercomputing capacity of 1.66 petaflops. इसके पहले भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने एक सुपर कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम था परम परावेगा। ओके, तो इसके पहले भी एक ऐसा सुपर कंप्यूटर बनाया था बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। थिंग इन दिस प्रोजेक्ट इज दिस इज डेवलप्ड इन इंडिया। आत्मनिर्भर भारत के अंदर इसे पूरी तरह से डेवलप किया गया है। एंड NSM is a joint initiative of Ministry of Electronics, Information and IT and Department of Science and Technology. The NSM mission aims is to build and deploy 24 facilities with cumulative compute power of more than 64 petaflop. Next.
Third National Youth Parliament Festival begins in New Delhi. The third edition of National Youth Parliament Festival has organized by Lok Sabha Secretariat and the Ministry of Youth Affairs on 10th-11th March 2022 in the Central Hall of the Parliament. ये जो यूथ फेस्टिवल है पार्लियामेंट फेस्टिवल है दिस इज अ फेस्टिवल where the students between the age of 18 to 25 years of age can participate in this youth parliament festival and will be acting as a particular leader as a member of Lok Sabha and the top 3 जो है national level youth competition जीतेंगे will get an opportunity to speak before the Lok Sabha speaker और इस वक्त हमारे लोक सभा स्पीकर हैं ओम बिरला. नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट फुल्ली ओन्ड वुमेन इंडस्ट्रियल पार्क इन हैदराबाद. एज यू नो इस वीक हमारा इंटरनेशनल वुमेन्स डे आया था तो यहाँ पे हम काफी न्यूज देखेंगे जो काफी ज्यादा वुमेन से भी रिलेटेड है. तो ये फर्स्ट वुमेन इंडस्ट्रियल पार्क इनॉग्रेट किया गया है हैदराबाद में जो पूरी तरह से लेडीज के थ्रू ऑपरेट किया जाएगा and this has been promoted by FLO, that is FICCI Ladies Organization, in collaboration with the state government, consisting of 25 units which represent 16 different sectors of green category where all different kind of sectors work will be done by women. Next, Hungary elects the first ever female president in their country. So the first ever female president of Hungarian parliament is Katalin Novak and she was elected by 137 votes to 51 in the parliament of Hungarian. उसी तरह से द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज प्रतिभा पाटिल दैट वाज ऑन जुलाई 25 2007. नेक्स्ट, इंडियाज लार्जेस्ट रीक्लीनिंग स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा बिंग बिल्ट एट बोध गया. गौतम बुद्धा के बारे में आप सभी जानते हैं. एक इनका नया स्टैचू बिल्ड हो रहा है एट बोध गया which is in a sleeping posture. Okay, and this has been built at 100 feet long and 30 feet high. The idol of this posture is in Uttar Pradesh, Kushinagar, where he attained Mahaparinirvana. Mahaparinirvana is the death or the moksha you can say, which is represented by a symbol called as stupa. And this will be operational for the devotees since February 2023. Next, Iran successfully test fires second military satellite called as Noor 2. Iran Islamic Revolutionary Guard Corps successfully launched a new satellite called as Noor 2. Recently इन्होंने नूरी 1 satellite भी launch की थी, that was in April 2020. That was the first military satellite and this is the second military satellite. नूर का मतलब होता है light in the Persian language. Next, Russia is the world's most sanctioned country of 2022. As आप सब जानते ही हैं रशिया और यूक्रेन इतना वॉर इश्यूज चल रहा है so definitely there are sanctions imposed by USA on Russia. Okay, so the number of sanctions as you can see with the help of this graph is the highest in Russia before February 2022 and after February 2022 you can see the number of increase in the sanctions on Russia. The second most countries having sanctions is Iran, then Syria, North Korea, Venezuela, Myanmar and Cuba. Russia faced total 2,778 new sanctions since February 2022. Mithali Raj becomes the first woman cricketer to appear at 6 cricket World Cups. As you know, Mithali Raj हमारे women cricket team की कैप्टन है and first woman बन गई हैं जो appear करेंगी 6 World Cup में. And she is also the only third cricketer overall to play the 6th World Cup after Sachin Tendulkar and Javed Midhanan. She has played in lot many ICC Women World Cup events that is since 2000, 2005, 9, 13, 17 and now in 2022 which is supposed to be held in New Zealand. Next, Freedom of the World 2022 report, India ranked partially free. Now, this is also a kind of report which determines how the other countries of the world perceive India. दूसरी country India के बारे में क्या सोचती है और किस तरह से हमारे country में investment करेगी. ये कैसे इन्हें पता चलता है through this reports only. So, maintaining a good number in this report is very important if India wants a good investment from the foreign countries. So, for the second consecutive year, India has been termed as partially free, not completely free, as per the report. The report title is Freedom in the World 2022, the global expansion of the authoritarian rule by the Freedom House, by a US-based NGO that assesses political rights and civil liberties. Overall, India का score 66 out of 200 in 2022. India was considered as a free country till 2020 when its score was 71. I hope this will be very helpful for you. Thank you. See you in the next session on the next Sunday. Till then, stay tuned.